हाय फ्रेंड्स मु संजय सर्वप्रथम आपण नमस्कार। ये देखंतु ओएसटीटी एग्जामिनेशन 2020 मसीहा पई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो किछि क्वेश्चन आंसर आपण सम्मुख को मु नै आछि जहा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। तो दयापूर्वक आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखिबे। ता सहित जदि हम चैनल ले आपण माने सब्सक्राइब करि नांती तो एबे ही सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि देबे एवं वीडियो को अति मात्रा रे शेयर करिवे। ता सहित आपणकर से भलो पाइबा मीन्स गुटे गुटे लाइक निश्चित वीडियो रे प्रदान करिवे। चलंतु डेरी न करी कोन रहिछि प्रथम क्वेश्चन देखनबा। देखंतु प्रथम क्वेश्चन आपण मानक पई अछि मास मीडिया इज बिकमिंग ए भेरी important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? Mass media is becoming a very important agency of socialization. Which one of the following is the most appropriate statement? Option ଅଛି socialization is done by the parents and the family only. Access to mass media is growing and mass media influence attitude, values and beliefs. Children cannot directly interact with media. Media is a very good way to advertise and sell products. कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 access to mass media is growing and mass media influence attitude, values and beliefs. Next question अछि how children learn. How children learn. Which one of the following is not true with respect to this statement? Children learn when they are cognitively ready. Children learn in a number of ways. Children learn as they are naturally motivated. Children learn in class only. कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए। Children learn in class only. Next question. Which one of the following strategies should a primary school teacher adapt to motivate her students? Which one of the following strategies should a primary school teacher adapt to motivate her students? Use incentives, rewards and punishment as motivating factors for each activity. Help children set goals as per their interest and support them in working towards the same. Set standard goals for the entire class and have rigid parameter to assess achievement to those goals. Encourage competition for marks amongst individual student. कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए। ऑप्शन नंबर 2 help children set goals as per their interest and should support them in working towards the same. Next question. Which one of the following is the primary agent of socialization? Which one of the following is the primary agent of the socialization? Option अछि computer, heredity, political parties, family. तो कौन हम यार सठिक आंसर मन रखिए फैमिली। सामाजिकरण पाई फैमिली होची गोटे गुरुत्वपूर्ण एजेंट हिसाब रे कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन. गिविंग चिल्ड्रेन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव pedagogic strategy since. Giving children group work in an effective pedagogic strategy since it allows some children to dominate the others in small group. Children learn from each other and support each other in the learning process. Children will be able to do their work quickly. It helps to reduce the teacher works. कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए। ऑप्शन नंबर 2 children learn from each other and support each other in the learning process. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई अछि ए चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस सु डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of dash. A child with normal intelligence show difficulty in reading and comprehending language. It indicates that the child is showing symptoms of dash.
डाइस्कॉर्फिया, डाइस्कोलेरिया, डाइस्प्राक्सिया, डाइस्लेक्सिया। तेणु कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए ऑप्शन नंबर 4 डाइस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the period of infancy is from dash, the period of infancy is from dash, birth to 2 year, birth to 3 year, 2 to 3 year, birth to 1 year। कौन हम यार सठिक आंसर ना आपण मैंने मन रखिए यार सठिक आंसर हम बार्थ टू 2 year, जन्म रु 2 वर्ष। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेट द चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 year is the dash stage of cognitive development। According to Piaget, a child between 2 to 7 year is in the dash stage of cognitive development: formal operational, concrete operational, sensory motor, आउट रही आपण मानकर प्रियोपर्सनाल। नेक्स्ट कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए ऑप्शन नंबर 4। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। कौन हम ना कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपली टू इजी, जनरल टू स्पेसिफिक। एटा स्पेसिफिक आपण मानक मैं कहीदेली तो यार सठिक आंसर आपण मानकर कौन हम जनरल टू स्पेसिफिक, साधारण रु निर्दिष्ट आड़ को गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू द असिस्टेंट्स दे प्रोवाइड to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called as scaffolding, participatory learning, collaborative learning, proximal development। कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए यार सठिक आंसर हम ऑप्शन 1 scaffolding। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द existing schemas to include new information is called as, the process of changing the existing schemas to include new information is called as assimilation, accommodation, egocentrism, adaptation। कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए assimilation। नेक्स्ट क्वेश्चन, in middle childhood speech is more dash rather than dash, in middle childhood speech is more dash rather than dash, socialized, egocentric, animistic, socialized, mature, immature, egocentric, socialized। कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इनवॉल्व्स डैश, the child centered education involves dash, children sitting in a corner, learning is restricted environment, activities that do not include play, hands on activities for kids। तो कौन हो यार सठिक आंसर ना ऑप्शन नंबर 4 hands on activities for kids। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक on his keyboard, the class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence, the class teacher observed Raghav in her class playing melodious self-composed music on his keyboard, the class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence। ऑप्शन अच्छी bodily, kinesthetic, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पाशियल। तेणु कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए यार सठिक आंसर हम जेहेतु से म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट खेलुँ तो यहाँ हम म्यूजिकल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए टीचर कंसीडर्ड बॉय एज ए नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट इज शो दैट टीचर इज डैश, जेंडर बाइस्ड, मोरालिस्टिक, राइट माइंडेड, एथिकल। When a teacher considers boys are naturally better at mathematics than girls, then it is so that the teacher is dash। कौन हम यार सठिक आंसर ना मन रखिए जेंडर बाइस्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपण मानक पई,
Inclusive education assumes that we should change dash to feed the dash. Inclusive education assumes that we should change the dash to feed the dash. System child, environment family, child environment, child system. कौन हमारा सठिक आंसर ना ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम चाइल्ड। तो यही थिला आपण मानक पई किछि क्वेश्चन जहाँ कि मु डिस्कशन कली। वीडियो को अति मात्रा रे शेयर करिवे ता सहित जदि चैनल सब्सक्राइब करनांती तो निश्चित सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।